Hi, Namaskar, and welcome back to Mindful Minutes. So, today we are going to talk about a very important topic. And in my journey of last 30 years, I've come across a lot of myths which are there in a common person related to the training and employment of persons with disability. और ये मिसकॉन्सेप्शन से प्रोग्रेस को स्लो नहीं करते बल्कि अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक भी कर देते हैं. सो लेट अस ट्राई टू ब्रेक देम वन ट्रूथ एट अ टाइम. वेरी कॉमन मिथ पीडब्ल्यूडी ट्रेनिंग नहीं ले सकते. For them, skill development is not useful. However, the reality is that PWD का learning style अलग हो सकता है, पर learning capacity compromise नहीं होती. सही training methodology, visual aids, hands-on practice, task analysis, simplified instructions से वो consistently perform कर लेते हैं. Persons with intellectual disability work well with step-by-step task breakdown. Persons with hearing impairment work well with visual modules or sign supported content. Visual impairment, screen readers और tactile tools, strong digital literacy के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. Another myth is उन्हें ट्रेन करना मुश्किल होता है और समय भी ज़्यादा लगता है. However, the reality is many persons with disability learn faster because of better focus, consistency और repetition से mastery डेवलप हो जाती है. इनिशियल ट्रेनिंग टाइम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी उन्हें एक्सेलेंट एम्प्लॉय बनाती है. सो एग्जाम्पल लीजिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे अगर स्टूडेंट है तो रूटीन मिल जाए तो परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल और एरर फ्री होता है. अनदर मिथ इज पीडब्ल्यूडी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज नहीं होते. दिस इज जस्ट अ मिथ. रियलिटी क्या है? मेनी इंडियन कॉर्पोरेट्स जिनके पास इंक्लूसिव हायरिंग प्रोग्राम्स हैं जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री हो गई, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, आईटी सर्विसेज हैं, उनका डाटा ये क्लियरली शो करता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हाई रिटेंशन रखते हैं, अटेंडेंस बेटर होती है, वो वर्क प्लेस लॉयल्टी ज़्यादा होती है उनके पास. प्रोडक्टिविटी इज अबाउट राइट जॉब, राइट स्किल मैच. डिसेबिलिटी से प्रोडक्टिविटी डिसाइड नहीं हो सकती. अनदर मिथ, सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से उन्हें वर्क प्लेस पे रखना बहुत ही रिस्की होता है. आई एग्री टू सम एक्सटेंट ऑन दिस. However, safety is a training and environment design issue, not a disability issue. Simple adaptation से environment 100% safe बन सकता है. Mock drills करवा सकते हैं. Evacuation plans अगर हमारे पास सही हैं. Tactile path है. Audio alarms हैं. Ramps हैं. Wheelchair है. और visual warning signs हैं. So workplace across the world are successfully doing this. So why can't India do? And I'm aware that India is also on its way. Another myth, इंडस्ट्री में पीडब्ल्यूडी के लिए जॉब्स नहीं होते हैं. However, the reality is आज के स्किल इकोसिस्टम में सेवरल हाई पोटेंशियल सेक्टर्स जैसे कि रिटेल ले लीजिए, हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, फूड एंड बेवरेज ले लीजिए, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसेस ले लीजिए, आईटी, आईटीईएस, डेटा एंट्री, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग या बैक ऑफिस के काम, मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली लाइंस जैसे पैकेजिंग हो गया, ग्रीन जॉब्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप और एनईपी 2020 और स्किल इंडिया इकोसिस्टम ने पीडब्ल्यूडी ट्रेनिंग को मेन स्ट्रीम प्रायोरिटी बना दिया है. सो इसके अलावा मिथ और क्या है? बहुत से मिथ हैं. एम्प्लॉयज उन्हें हायर नहीं करना चाहते. सो दैट इज नॉट अ फैक्ट. इट्स नॉट अ रियलिटी. रियलिटी इज आज बहुत सारे एम्प्लॉयज कॉन्शियसली इंक्लूसिव हायरिंग टारगेट रख लेते हैं. And not because there is some benefit charity. It is because they have a business sense in hiring. Diverse workplaces ज़्यादा productive होते हैं. Customers trust inclusive brands. Retention cost reduce हो जाती है. But employers need confidence. और confidence एक अच्छी training skill, quality skill training से आता है. PWD सिर्फ low level jobs कर सकते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा myth है. Reality क्या है? ये एक आउटडेटेड बिलीफ है. आई विल से डिजिटल टूल्स ने स्किल लैंडस्केप को कंप्लीटली चेंज कर दिया. हमारी भी स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं, उनकी क्यों नहीं? विजुअल इम्पेयर वर्क वेल विद स्क्रीन रीडर्स लाइक कोडिंग, कंटेंट रिव्यूइंग, टेली काउंसलिंग, ये सारे काम कर लेते हैं. डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, डेटा एंट्री, पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट डू.
लोकोमोटर डिसेबिलिटी डू कस्टमर सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, और ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है. Quality checking, data cleaning, pattern recognition, graphic designing works very well with ASD. Retail, F&B, commerce, packing, office assistance. It's, I mean, skill is decided not by disability. इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न कम है. रियलिटी है, हर स्टडी ये बताती है कि माइनर accommodations के साथ मेजर रिटर्न्स हैं. Employees benefit through higher focus, loyalty, and lower attrition costs. PWD experiences low quality of life. Who says? Global reality says that quality of the life depends on access, attitudes, and opportunities, not on disability. Countries with inclusion show high levels of social, economic, and emotional well being. PWD cannot compete in a skilled, tech driven world. Digital accessibility, AI tools, screen readers, captioning, ergonomic devices have redefined capability. And I think we are seeing this in everyday life. PWD are working in IT, design, finance, customer service, research, and entrepreneurship. Where not? PWD cannot communicate effectively. Communication is not restricted to speech. हमारा सबसे बड़ा मिथ है कि हम उसको स्पीच के साथ मिला देते हैं. So they may be communicating differently. Sign language, AAC tools, digital devices हैं, gestures हैं, tactile systems हैं, screen readers हैं. तो communication is not equivalent to speech. And ये reality हम जब समझ जाएंगे तो we'll never be able to say what we have been saying. Assistive technology is too complicated for PWD. ये उतनी ही complicated है PWD के लिए जितनी हमारे और आपके लिए. Technology is now simpler. बहुत सिंपल है, इंट्यूटिव है, कस्टमाइजेबल है, और फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू एआई enabled accessibility tools. Another myth, mental disability means violent behavior. किसी एक को देख लिया और जनरलाइज कर दिया. This is the most harmful global myth. Most behavior issues stem from lack of communication, unmet needs, sensory overload, or environment, and not aggression. मैं कुछ बोल के नहीं मांग पाऊंगी तो मैं जाके खींच लूंगी. Another myth, PWD don't need sexuality education. This is not reality. This myth leads to abuse worldwide. Sexuality education is essential for safety, dignity, and informed consent. PWD cannot live independently or get married. This is again, हालांकि ये अब बहुत मायने में लोगों के सामने अवेयरनेस के जरिए आ चुका है, बट फिर भी हम में से बहुत लोगों का ये बिलीफ है, and it is a complete myth. Many PWD globally live independently, have families, relationships, and fulfilling personal lives. So friends, myths break future. जब हम इस मिसकंसेप्शन को चैलेंज करते हैं, तभी हम एक इंक्लूसिव, स्किल ड्रिवन इंडिया क्रिएट कर सकते हैं. अगर ट्रेनिंग राइट हो, अपॉर्चुनिटीज एक्सेसिबल हो, और माइंडसेट इंक्लूसिव हो, PWD नॉट ओनली वर्क, दे एक्सेल. ऑलवेज रिमेंबर, स्किल उनके अंदर ऑलरेडी होती है, हमें सिर्फ उस स्किल को एक सही डायरेक्शन देनी होती है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर, and let this video go to many who really need it. So until my next video, bye bye from here.